Gallbladder carcinoma. Learning objectives. By the end of the session, learners will be able to discuss the causes, pathophysiology, and manifestations of the following gallbladder cancer, discuss assessment, diagnostic test, medical and surgical management of gallbladder cancer, apply nursing process including assessment, planning, implementation, and evaluation of the care provided to the client with gallbladder carcinoma. So cancer starts basically uh, as we have discussed in the previous lectures of the different organs carcinoma. So what happens there, that the cancer starts when the cells in the body begins to grow abnormally. So the abnormal growth of the cells that begins in the gallbladder and can be found anywhere in the gallbladder leads to gallbladder carcinoma. And what it is written here, cancer starts when cells in the body begins to grow out of control. Cells in nearly any part of the body can become cancer and can spread to other areas of the body. Is a cancer that starts in the gallbladder. सो व्हाट हैपन्स कि जब भी जो कैंसर सेल्स यानी कि हमने जो बात की है कि सेल्स क्या होंगे, जैसे हमें पता है कि जो चेंजेस होती हैं वो डीएनए जो होता है उसमें चेंजेस आने लग जाती हैं सेल्स की, जो कि क्या करती हैं, सेल्स की ग्रोथ को एबनॉर्मल कर देती हैं. और व्हेन द ग्रोथ ऑफ द सेल्स गेट आउट ऑफ द कंट्रोल एंड बिकम एबनॉर्मल, ठीक है, और दे आर एग्जिस्टिंग और लिविंग एंड ग्रोइंग इवन द नॉर्मल सेल्स डाई, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास एक कार्सिनोमा की स्टेज आएगी कि जो नॉर्मल सेल्स या टिश्यूज़ थे वो डेड हो चुके हैं, लेकिन जो एबनॉर्मल सेल्स हैं दे आर स्टिल लिविंग. ठीक है, तो गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा क्या है, ये अनकॉमन होता है, इतना ज़्यादा जो है वो कॉमन नहीं मिलता है, रेयर होता है. एट अर्ली स्टेजेस इट इज़ क्योरेबल बट लेटर स्टेजेस प्रोग्नोसिस इज़ वेरी पुअर. ठीक है, तो कार्सिनोमा ऑफ द गॉल ब्लैडर इज़ द मोस्ट कॉमन प्राइमरी हेपेटोबिलियरी कार्सिनोमा. ठीक है, जैसे कि क्या होगा, सेकेंडरी कॉज हमारे पास कोई प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से क्या है ये कार्सिनोमा डेवलप होता है. व्हेन द डायग्नोसिस इज मेड इंसिडेंटली एट द टाइम ऑफ cholecystectomy, सर्जिकल रिसेक्शन कैन बी क्यूरेटिव. Most commonly, the tumor is unresectable and rarely diagnosed preoperatively despite patient symptoms. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, जैसे कि हमने क्या बोला है कि जो मैंने पहले बात की है कि एट अर्ली स्टेजेस इट इज़ क्योरेबल बट लेटर स्टेजेस प्रोग्नोसिस इज़ वेरी पुअर. ठीक है, तो क्या होगा कि ऐसा पेशेंट जिसकी कोलेसिस्टेक्टमी हो रही है, ठीक है, उसकी बायोप्सी या फिर जो पेशेंट की जो सीटी स्कैन्स वगैरह हैं या जो उसके अगर सेल्स के जो हैं वो कल्चर्स वगैरह गए हैं पैथोलॉजी लैब में, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि पेशेंट जो है अगर जो है उसे गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा हुआ गया है, ठीक है, तो क्या होगा कि कोलेसिस्टेक्टमी से सर्जिकल रिसेक्शन करके क्या होगा कि वो क्यूरेटिव हो सकता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मोर कॉमनली क्या होता है कि जो ट्यूमर होता है वो अनरिसेक्टेबल होता है, ठीक है, और रेयरली डायग्नोज्ड होता है प्री ऑपरेटिवली. क्यों, क्योंकि पेशेंट डिस्पाइट पेशेंट जो सिम्टम्स, ठीक है, पेशेंट सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक भी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी डायग्नोज नहीं हो पाता है कि जो सेल्स हैं वो मेटाप्लास्टिक हो गए हैं या नहीं हुए हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्यूमर होता है वो अनरिसेक्टेबल होता है, ठीक है, और जो डायग्नोसिस होती है वो करना मुश्किल हो जाता है. Gallbladder carcinoma, how it spreads. Gallbladder cancer tends to spread to nearby organs and tissues, that is liver or small intestine. It is also spread through the lymphatic system. तो जैसे हमने पहले बात की है कि ये क्या होता है कि लिवर गॉल ब्लैडर स्मॉल इंटेस्टाइन पेनक्रियाज, देज आर द पार्ट्स ऑफ द बिलरी ट्री. ठीक है, तो ये जो कार्सिनोमा होता है वो क्या होता है, वो इन्हीं के ही किसी कॉज की वजह से, एक सेकेंडरी कॉज की वजह से अक्कर होता है. What causes it? No one factor has been clearly shown to cause gallbladder cancer. It is more often seen in the older patients with the long-standing cholecystolithiasis.
ठीक है। जैसे कि हमने पहले बात की है कि कार्सिनोमा क्या होता है कि वो एक लीडिंग कॉज होगा, किसी सेकेंडरी कॉज की वजह से होगा। हेपेटोबिलियरी कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है, लिम्फेटिक सिस्टम की जो है उसके थ्रू हो सकता है, लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू हो सकता है। अब बेसिकली कॉजेज इसके होते क्या हैं, जो अगर हम जनरल बात करें तो वेन एवर द चेंजेस डिवेल्प इन द DNA, द चेंजेस leads to the cells to grow out of control and to continue living when other cells normally die. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं दे आर स्टार्ट गेटिंग एक्यूमुलेटेड एंड फॉर्म ट्यूमर दैट कैन ग्रो बियॉन्ड द गॉल ब्लैडर एंड स्प्रेड टू अदर एरियाज ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मोर कॉमनली द कैंसर विच विल बी फाउंड इन द gallbladder carcinoma is the gallbladder adenocarcinoma. ठीक है, that begins in the glandular cells that lie the inner surface of the gallbladder. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि द एडिनोकार्सिनोमा बिगिनस इन द ग्लैंडुलर सेल्स जो कि लाई कर रहे होते हैं या फिर लाइनिंग किसकी कर रहे होते हैं, इनर सरफेस ऑफ द गॉल ब्लैडर को। और इसके अलावा जो मेजर कॉजेज आएंगे उसमें क्या आ जाएगा कि ओल्डर एजेस, स्मोकिंग। ठीक है, तो ये जो है वो मेजर कॉजेज आ जाएंगे गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा के। रिस्क फैक्टर्स हैं, गॉल स्टोन्स मेजर रिस्क फैक्टर है, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। गॉल ब्लैडर पॉलिप्स, this type of polyp is a growth that sometimes forms when the small gallstones get embedded in the gallbladder wall. तो ये क्या होगा कि गॉल स्टोन्स की वजह से गॉल ब्लैडर पॉलिप जो है वो डेवलप होने लग जाएंगे व्हेन द गॉल स्टोन्स गेट एम्बेडेड इन द गॉल ब्लैडर वॉल। एज, एज वी हैव डिस्कस्ड earlier, that the older ages are the causes and the risk factors of developing gallbladder carcinoma, and gender, women are about twice as likely to develop gallbladder cancer as men, as we have discussed in our previous lectures of cholecystitis and cholelithiasis, due to the reason of the secretion of hormones in the women of estrogen and progesterone. Smoking, tobacco use may increase the risk of gallbladder cancer. Family history, a family history of gallbladder cancer slightly increases a person's risk of developing gallbladder cancer. Clinical manifestations, people with gallbladder cancer can experience the following symptoms or signs. Sometimes people with the gallbladder cancer do not show any of these symptoms, that's why they are difficult or rarely diagnosed pre or post operatively. So the symptoms or clinical manifestations involve jaundice, yellowing of the skin and whites of the eyes, abdominal pain, nausea and vomiting, bloating, a lump in the abdomen, fever, tenderness in the abdomen while touching, itchy skin, darker urine. And also the main symptom which I have found is the weight loss without trying, that the person is not trying to lose its weight intentionally, it is losing unintentionally. ठीक है, so not a noticeable or the not a intentionally weight loss, and what happens that weight loss without trying. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नोटिसेबल वेट लॉस जो है वो अक्कर होता है विद इन लास्ट 6 to 12 months। ठीक है, तो ये एक जो है वो कॉज साइन आता है हमारे पास, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अनदर साइन एंड सिम्टम इज एब्डोमिनल पेन, एंड द पेन लोकेशन विल बी अपर राइट एब्डोमेन। ठीक है, तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हमारे पास आ जाती हैं। इसके अलावा क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, बायोप्सी करवाएंगे, एक्सरे, परक्यूटेनियस कोलेंजियोग्राफी, वी हैव डिस्कस्ड इट बिफोर, laparoscopy discussed it before, blood test, CT scan, MRI, ultrasound, we all know about these procedures. Ultrasound and gallbladder carcinoma studies have demonstrated that the gallbladder wall to consist of 2 or more, usually 3 layers. Gallbladder tumors are usually confined to the mucosa or muscle layer or have only invaded the shallow subserosa. So we have the layers the gallbladder contains is the first mucosal, the inner lining, then the muscle layer, then connective tissue layer, and the serosal layer. So ultrasound studies show that the gallbladder wall consists of 2 or more, usually 3 layers, and gallbladder tumors are usually confined
where the gallbladder tumor is confined to the mucosa or muscle layer or have only, या फिर क्या होगा कि सिर्फ इन्होंने सबसिरोसा को जो है वो इन्वेड किया होगा. So here we have the TNM staging that we have already discussed in the previous lectures of the carcinomas. So it is the tool which we use to stage the carcinoma. So one tool that doctors use to describe the stage is the TNM system. Doctors use the results from diagnostic tests and scans to answer these questions. Tumor, node and metastasis. T. How large is the primary tumor? How is it located? Has the tumor spread to the lymph nodes? If so, where and how many? Metastasis, how the cancer metastasized to other parts of the body? If so, where and how much? So T for tumor, N for lymph nodes, and metastasis for the spread. The results are combined to determine the stage of the cancer for each person. There are 5 stages. Stage 0, stage 1, and stage 1 through stage 4, 1 through 4. The stage provides a common way of describing the cancer. So first we will discuss about the tumor. Using the TNM system, the T plus a letter of a number 0 to 4 is used to describe the amount of cancer found in the gallbladder. Tx, T0, T इन साइटो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी एक्स यानी कि बता रहा है कि द प्राइमरी ट्यूमर कैन नॉट बी एवेल्युएटेड. टी नॉट या T0, नो एविडेंस ऑफ कैंसर वॉज फाउंड इन द गॉल ब्लैडर. T in situ refers to carcinoma in situ, which means that the tumor remains in a pre-invasive state and its spread, if any, is very confined. T1, the tumor is only the gallbladder in the gallbladder and has only invaded the lamina propria, a type of connective tissue found under the thin layer of the tissue covering a mucosal membrane or the muscle layer. T1A, the tumor has invaded the lamina propria. T1B, the tumor has invaded the muscle layer. T2, the tumor has invaded the perimuscular connective tissue, the layer between the muscle layer and the serosa, but has not extended beyond the serosa or into the liver. T3, the tumor extends beyond the gallbladder or has invaded the liver or one other adjacent organs or structures such as stomach, duodenum, part of the small bowel or small intestine, colon or pancreas. T4, the tumor has invaded the main portal vein or hepatic artery or has invaded more than one organ or structure beyond the liver. Now node stands for the lymph nodes, the tiny bean-shaped organs that help fight infection. Lymph nodes near the gallbladder are called regional lymph nodes. Lymph nodes in other parts of the body are called distant lymph nodes. So NX, the regional lymph nodes cannot be evaluated, and not there is no regional lymph node metastasis, and 1 there is regional lymph node metastasis, and 2 there is distant lymph node metastasis. So regional, which is present near the gallbladder, and the distant, which are present in the other parts of the body. Metastasis M0, there is no distant metastasis, and M1 there is 2, 1 or more other parts of the body. सो स्टेजिंग में हम क्या करते हैं कि जो ट्यूमर होता है उसको 1 to 4 तक करते हैं, एन को 0 to 3, और फिर एम जो है वो 0 और 1 को जो है वो शो कर रहा होता है. देन कैंसर स्टेजिंग ग्रुप्स. अब हम इसको स्टेज कैसे करेंगे. अब यहाँ पे ट्यूमर को, लिम्फ नोड्स को और मेटास्टेसिस जो है उन तीनों को हम कंबाइनली देखेंगे. तो स्टेज 0 इज़ डिस्क्राइब कैंसर इन साइटो, टी इन साइटो, एन नोट और एम नोट, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि एम नोट इज़ देयर इज़ नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस और एन नोट नो रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस. स्टेज 1, ट्यूमर इज़ ओनली इन द गॉल ब्लैडर एंड हैज़ नॉट स्प्रेड. ठीक है, तो यहाँ पे एन नोट नो रीजनल मेटास्टेसिस क्योंकि वो भी गॉल ब्लैडर में ही है. एम नोट यानी कि मेटास्टेसाइज नहीं हुआ, गॉल ब्लैडर में ही है. और T1 जो कि हमने पढ़ा है कि ट्यूमर इज़ ओनली इन द गॉल ब्लैडर एंड हैड ओनली इन्वेडेड द लैमिना प्रोप्रिया.
ठीक है. Now, stage 2, a tumor has extended to the perimuscular connective tissue but has not spread elsewhere. तो अभी भी spread नहीं हुआ, तो N नॉट यानी कि रीजनल lymph nodes में ही है. और फिर क्या है कि M नॉट यानी कि मेटास्टेसाइज नहीं हुआ. और T2, the tumor has invaded the perimuscular connective tissue, the layer between the muscle layer and the serosa, as we have discussed the layers of the gallbladder, but has not extended beyond the serosa. ठीक है, तो outer layer को उसने जो है वो extend नहीं किया है. अब क्या आती है stage 3. A tumor has spread beyond the gallbladder but not to nearby arteries or veins. It has not spread to any lymph node or other parts of the body. Stage 3b, a tumor of any size has spread to nearby lymph nodes but not to nearby arteries or veins or to other parts of the body. तो अब क्या होगा कि N1 यानी कि lymph nodes इन्वॉल्व हो चुके हैं, M नोड यानी कि अभी तक आर्टरीज और वेन्स या फिर अदर पार्ट्स ऑफ में नहीं गया है, और T1, T2, T3 जो कि हमने इनकी सीरीज पढ़ ली हुई है. ठीक है, तो वो सही क्या होंगी कि इसने अब लैमिना प्रोप्रिया को भी इन्वॉल्व कर लिया, गॉल ब्लैडर को भी किया पहले, फिर लैमिना प्रोप्रिया कनेक्टिव टिश्यूज भी इन्वॉल्व हो गए. ठीक है, तो इस तरह से फिर स्टेज 4A, अ ट्यूमर हैज स्प्रेड टू नियर बाय आर्टरीज, वेन्स और नियर बाय लिम्फ नोड बट इट डज नॉट स्प्रेड, हैज़ नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो T4 एन नोड, अब क्या है कि उसने आर्टरीज और वेन्स में स्प्रेड हो चुका है. ठीक है, तो T4 एन नोड और N1 M नोड. Stage 4B describes any tumor that has spread to other parts of the body. Any T, any N और M1 आ जाएगा. ठीक है, और any tumor that has distant lymph node spread even it has not spread to distant organs. ठीक है, तो T की कोई भी जो है यहाँ पे स्टेज आ सकती है, N2 आएगा और M नॉट आएगा. Treatment. Surgery is the removal of the tumor and some surrounding healthy tissues during an operation. A surgical oncologist is a doctor who specializes in treating cancer using surgery. The following are two types of surgery used in the treatment of gallbladder cancer. Cholecystectomy, also called a simple cholecystectomy. This procedure involves the removal of gallbladder. An extended cholecystectomy is the removal of the gallbladder 1 inch or more of the liver tissue located next to the gallbladder and all of the lymph nodes in the region. ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा. Radical gallbladder resection. This procedure involves the removal of the gallbladder, a wedge-shaped section of the liver near the gallbladder, the common bile duct. अब wedge shape यानी कि एक triangular जो section होगा liver का नियर द गॉल ब्लैडर, उसे जो है वो लेंगे क्योंकि बिहाइंड बिनीथ द लिवर जो है गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, तो उसका एक सेक्शन आ जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट आ जाएगी, पार्ट और ऑल the ligaments between the liver and intestines and the lymph nodes around the pancreas and nearby blood vessels. Palliative surgery may sometimes help relieve symptoms caused by gallbladder cancer, even if the tumor can be removed completely. For example, surgery may relieve a blockage of the bile ducts or intestines or relieve bleeding. Radiation therapy is the use of high energy X-rays or other particles to destroy cancer cells. Most common type of radiation treatment for the gallbladder cancer is called external beam radiation therapy. ठीक है, अब एक्सटर्नल रेडिएशन बीम थेरेपी में ये होता है कि हम जो है वो एक्सटर्नली जो है वो बीम जो होती है रेडिएशंस की वो हम पास करते हैं, विच इज़ रेडिएशन थेरेपी गिवन फ्रॉम अ मशीन आउटसाइड द बॉडी. Radiation therapy may be used before the surgery to shrink the size of the tumor or after the surgery to destroy any remaining cancer cells. In some cases, radiation therapy is given during surgery to directly target the area of the tumor and protect healthy organs from the effects of traditional radiation therapy. This procedure is called intraoperative radiation therapy or IORT, intraoperative radiation therapy. Chemotherapy is the use of drugs to destroy cancer cells, usually by stopping the cancer cell's ability to grow and divide. Common ways to give chemotherapy include an intravenous tube placed in a vein using a needle by injection or in a pill or capsule that is swallowed orally.
If the patient is orally free, chemotherapy may be given before surgery to shrink the tumor or after surgery to destroy any remaining cancer cells. It may be combined with radiation therapy. Nursing diagnosis: nutrition less than body requirements, risk for imbalanced diet. Risk for factors may include self-imposed or prescribed dietary restrictions, nausea, vomiting, dyspepsia, pain, loss of nutrients, impaired fat digestion due to the obstruction of bile flow. As a result of cholelithiasis or cholecystitis, desired outcomes report relief of patient क्या करेगा verbalize Patient will verbalize or report relief of nausea and vomiting, demonstrate progression towards desired weight gain, or maintain weight as individually appropriate. Nursing interventions and rational: calculate calorie intake, keep comments about appetite to a minimum, identifies nutritional deficiencies or needs, focusing on problem creates a negative atmosphere and may interfere with the intake. Weight as indicated monitors effectiveness of the dietary plan. Consult with patients about the likes and dislikes, foods that cause distress, and preferred meal schedule. Involve patient in the planning, enables patient to have a sense of control and encourages eating. Provide a pleasant atmosphere at meal time. Remove nauseous stimuli, useful in promoting appetite, reducing nausea. Provide oral hygiene before meals, leads to a clean mouth, enhances appetite. Offer effervescent drinks with meals if tolerated, may lessen nausea and relieve gas. Note may be contraindicated if beverage cause gas formation, gastric discomfort. Assess for abdominal distension, frequent belching, guarding reluctance to move, non-verbal signs of discomfort associated with impaired digestion, gas pain. Monitor laboratory studies, blood urine nitrogen, pre-albumin, albumin, total protein, transferrin levels. Provide information about the nutritional deficits or effectiveness of the therapy.